Here is a synopsis from last week. Last week we read chapter 51 and 52 of Rudra Samhita, section 5. And in that we read how Lord Shiva gave Asura Bana, who became the chieftain of the Ganas, who was a great grandson of Prahlada, devotee of Shiva, and upon propitiating Lord Shiva by means of Tandava, he was asked to choose a boon by Shiva himself, and he requested Lord Shiva to be with him to stay in Sonita and with his sons in Gana. When Kama glanced Shiva, and as a result of which Lord Shiva became distressed and he started missing Parvati, and he asked Nandan to go and fetch goddess Parvati. Celestial damsels wanted to sport with Shiva in the form of Parvati. They assumed different forms of Parvati. Usha, the daughter of Bana, assumed the form of Parvati, and just then Parvati, who knew of Usha's desire of sporting with Shiva, told her that on 12th day of Vaishaka she would sleep in the harem, and a man would come and outrage her modesty, and then he will become her husband. In the second chapter we read last time, we read that Bana became haughty and requested Lord Shiva to suggest a fight by which either his 1,000 hands may fall by enemy's weapon, or his enemy would fall in 1,000 pieces. Lord Shiva was furious to hear it and told him that very soon, when Bana's flagstaff will fall without being blown by wind, he would face a terrible battle against a person equal to Shiva in strength, in which his 1,000 hands would be cut off by weapon. Bana was eagerly waiting for this to happen, and when the flagstaff was broken, he was delighted and set out for the war along with all of his general. In the meantime, Bana's daughter Usha was sleeping in the harem, and on the 12th day of Vishaka was seized by a grandson of Krishna, Anirudh, who outraged her modesty. She was extremely anxious and remembered the sin she had committed in the past. She was fascinated by Anirudh and requested Chitralekha to help her find him. Chitralekha painted several men on the basis of the description by Usha and finally drew Anuruddha. After Usha recognized him, she requested Chitralekha to bring Anuruddha to her. She brought Anuruddha to Usha, and Usha and Anuruddha engaged in the sexual dalliance. But the guards of the harem found out about it and told Bana the Indra had entered the harem and outraged the modesty of his daughter. Bana was surprised to hear that. Today we will read chapter 53, that's the dalliance of Usha and Anirudh. Chapter 54, that's the fight among Bana, Shiva, Krishna and others. Our English reader is Sunita Aunty, and Hindi reading Rashna Aunty will be summarizing chapters from 51 to 54. Thank you. Thanks a lot, Shukrana Guruji Maharaj. Anyone who wants to read Shivpuran, you can contact Seema Aunty, Mansi Aunty or myself, Shukrana Maharaj. Jai Guruji. Shukrana to Guru Sahib for granting me this opportunity. Apologies in advance for any omissions and errors. Chapter 53, the dalliance of Usha and Aniruddha. Sanat Kumara said, the infuriated Asura Bana went there and saw Aniruddha, who was in the fresh years of youth and who seemed to have been born especially for divine sports. The infuriated Bana, very efficient in war, was a bit surprised on seeing him and wondered why he had done like that, and therefore said mockingly, "Oh, this man is really handsome, bold and daring. Who can this unfortunate deluded person be? His death is imminent. O angry ones, with terrible weapons immediately kill the fellow who has outraged the traditional purity of my family and defiled my dear daughter. O heroic ones, bind the terrible fellow of evil conduct. Put him in a frightful prison for a long time." After saying this, the Asura Bana thought within himself intelligently, "It is not known who this fearless fellow is. Certainly he is a man of terrible exploit." Thinking thus, Bana hesitated to act. Then gradually the evil-minded Daitya ordered 10,000 men from his army for slaying him. Commanded by him, those heroic terrible fellows encircled the harem, saying, "Cut him, pierce him." On seeing the army of the enemy, Aniruddha, the scion of the Yadava family, roared. He seized the big iron club from the harem gate and came out of the apartment like the god of death, armed with thunderbolt. With that iron club, he killed the servants and returned to the harem.
O excellent sage, thus Aniruddha, strengthened by Shiva's splendor, with eyes turned red by anger, killed all the 10,000 men of the army. With the sword captured in the course of the battle, he killed 10,000 of horses and charioteers of the Lord of Daityas. When 100,000 soldiers had been killed, the Asura Bana furiously entered the fray, taking with him Kumbhanda, expert in war. He then challenged Aniruddha for a duel. In the course of that war, Aniruddha, the highly intelligent son of Pradyumna, of refulgent body and protected by Shiva's brilliance, Aniruddha then seized a spear blazing like the fire of death for killing him and hit him with that. Bana was hit with the spear even as he was seated in a chariot. In a trice, the heroic demon vanished along with his horse. When he vanished, Aniruddha, the unvanquished son of Pradyumna, stood steady like a mountain, observing all the quarters. Remaining invisible, that Danava Bana, practicing deceptive fight, hit him again and again with thousands of weapons. That powerful son of Bali, the heroic devotee of Shiva, the Asura Bana, deceitfully bound him with serpent nooses. After binding him and putting him in a cage, he stopped the battle. The infuriated Bana then spoke to the very powerful son of the charioteer. The Asura Bana said, O son of charioteer, cut off the head of this wicked fellow who has defiled my family. After chopping off the limbs, give them to the Rakshasas, or let the beasts of prey swallow his flesh and blood, or kill this sinner and put him in a grassy well. O son of the charioteer, what more shall I say? By all means he must be slain. Sanat Kumara said, on hearing his words, the Asura Kumbhanda, the most excellent of the ministers and righteous in thought, spoke to Bana. Kumbhanda said, O Lord, this is not a proper thing to do. Please consider. I think by killing him we will be killing ourselves. O Lord, he seems to be equal to Vishnu in exploits. His strength has become increased by the brilliance of the moon-crested Lord, your favorite. Moreover, in daring he is equal to the moon-crested Lord. Though he is reduced to this plight, he maintains his manliness. It is by the grace of Shiva that he, the grandson of Krishna, considers us significant as the blades of grass. Although he is bitten by serpents, cruelly he is still very strong. Sanat Kumara said, after saying thus to Bana, the Danava, the most excellent among statesmen, spoke to Aniruddha. Kumbhanda said, O hero, who are you? Whose son are you? Tell us the truth, O meanest of men of evil conduct, by whom you have been brought here. Repeat piteously, I am vanquished. Eulogize the heroic lord of the Daityas. Join your palms in reverence and bow to him. If you do like this, you may get release. Otherwise, this captivity and tortures will continue. On hearing this, Aniruddha replied. Aniruddha said, O friend of the basest of Daityas, O you that sustain yourself with the balls of rice offered in the hands, O demon of evil conduct, you do not know the laws of adversaries. I think for the valorous person, humble supplications and running away from the battlefield are worse than death. These are adverse and painful to him like a dart. For a Kshatriya, death while fighting face to face with the enemy is commendable rather than joining palms in reverence, like a man in humble condition professing to be valorous. Sanat Kumara said, these and many other heroic words he uttered, on hearing which Bana was surprised and angry too. Then a celestial voice was heard for the pacification of Bana, which all the heroes, Aniruddha and the ministers, stood listening to. The celestial voice said, O Bana, O great hero, you shall not be angry. O devotee of Shiva, O intelligent one, you are the son of Bali. Ponder over this. Shiva, the Lord of all, the Supreme Lord, is the witness of all activities. This entire universe, including the mobile and immobile beings, is subservient to him. He alone is the creator, maintainer, and the destroyer of the worlds, always taking up the attributes of Rajas, Sattva, and Tamas in the form of Brahma, Vishnu, and Shiva. The Lord is omnipresent. He is the inducer greater than all. He is free from aberrations.
unchanging, eternal, the Lord of illusion and devoid of attributes. Even a weak person becomes strong thanks to his will, O excellent son of Bali. O intelligent one, realize this in your mind, be normal and complacent. The Lord who quells pride, who is an expert in various sports, and who is favorably disposed to his devotees, will destroy your arrogance. Sanat Kumara said, O great sage, having spoken thus, the celestial voice stopped. On hearing these words, the Asura Bana did not kill Aniruddha. Then he went to his harem and drank excellent beverages. His intellect was adversely affected. He forgot those words and began to sport. Aniruddha was bound by serpentine bodies emitting poison powerfully. His passion for his beloved had not been satiated fully. He remembered Durga then. Aniruddha said, O goddess, you are worthy of being resorted to. I have been bound by serpents. O goddess bestowing fame, O goddess of fierce fury, come and save me. O great goddess, devotee of Shiva, O cause of creation, sustenance and dissolution, there is no other savior except you. O Shiva, save me. Sanat Kumara said, propitiated by him, Kali, lustrous like the split collyrium, alive there in the dark night of the 14th day, in the dark half of the month Jeshta. With the heavy blows of her fist, she broke the cage. She reduced the serpentine arrows to ashes. She released Aniruddha and let him enter the harem and then vanished from the scene. O great sage, thus thanks to the grace of the goddess, the energy of Shiva, Aniruddha got rid of difficulty, became free from pain, and obtained happiness. Securing success by the means of Shiva's energy, Aniruddha, the son of Pradyumna, gained access to his beloved, the daughter of Bana, and rejoiced. In the company of his beloved, the daughter of Bana, he carried on dalliance and was happy, drinking the beverages till his eyes became red. Chapter 54, the fight among Bana, Shiva, Krishna, and others. Vyasa said, O excellent sage, when Aniruddha, the grandson of Krishna, was abducted by the daughter of Kumbhanda, what did Krishna do? Please narrate it to me. Sanat Kumara said, O excellent sage, on hearing the woeful cries of his women, when Aniruddha had gone off suddenly, Krishna too became vexed. The 4 months of the rainy season thus went by when his relatives and Vishnu could not see Aniruddha, so they bewailed. On hearing from Narada about the imprisonment and activities of Aniruddha, the Vrishnis, followers of Krishna, became dejected. On hearing everything, Krishna immediately called Garud and went to the city of Shonita, eagerly for fighting. Pradyumna, Yuyudhana, Samba, Sarana, Nanda, Upananda, Bhadra, and others following Rama and Krishna went there. They were accompanied by 12 Akshohinis. They, the chief of Sattavas, laid a siege all around the city of Bana. On seeing the parks, fortresses, ceilings, and minarets of the city thus broken, Bana became infuriated and set forth with an equal number of armies. In order to help Bana, Lord Rudra, accompanied by his son and the Pramathas, rode on the bull Nandin and arrived there to fight. A tumultuous fight, wonderfully causing horripilation, ensued between Krishna and his followers on the one hand and the supporters of Bana, Rudra, etc. on the other. The fight was between Krishna and Shiva, Pradyumna and Kartikeya, Kumbhandaka and Kuparkarna, Bala and Sanyuga. Samba fought with Bana's son, Satyaki with Bana, Garud with Nandin, and groups of one side fought with the groups of the other. Brahma and other gods, sages, siddhas, charanas, gandharvas, and celestial damsels came there in aerial chariots to witness the affray. O best of Brahmins, a terrible fight ensued between the members of the Yadu family with the groups of Pramathas, ending with Revatis. Krishna, his brother Rama, and the intelligent Pradyumna fought an unequal fight with the Pramathas. The fight continued with Agni, Yama, Varuna, Vimukha, Tripada, Jwara, Kartikeya, and groups of Pramathas with the Vrishnis. It was terrible and frightful, causing horripilation. There was a fight with the shameless women too, several groups of terrifying coteries at every step, not far from one another. Krishna routed the Bhutas, Pramathas, and Guhyakas. The
the followers of Shiva, with sharp-pointed arrows discharged from his bow. The heroes Pradyumna and others, jubilant over the war, destroyed the armies of the enemies and fought terribly. On seeing his army being scattered, Shiva became highly infuriated and roared terribly. On hearing that, Shiva's gunners too shouted and fought. They suppressed the opponents with their strength increased by Shiva's brilliance. Krishna discharged separate types of missiles from his bow towards the trident-bearing Lord Shiva, who without showing any dismay quelled them directly. They discharged Brahma missile in counter to Brahma missile, the mountain missile to the wind missile, the cloud missile to the fire missile, the Shiva missile to the Narayana missile. Defeated by the opponents, the army of Krishna fled, O Vyasa. It could not face the full refulgence of Shiva. O sage, when his army was routed, Lord Krishna, the scorcher of enemies, discharged terrible fever missile named Cold. O sage, when the army of Krishna was routed, the cold fever missile of Krishna rushed at Rudra, blazing the 10 quarters. On seeing that coming, Lord Shiva discharged his own fever missile. The two fever missiles fought each other. Oppressed by the fever missile of Lord Shiva, the fever missile of Shiva cried aloud. Unable to secure succor elsewhere, it eulogized the bull-bannered Lord. The delighted Lord Shiva, favorably disposed to those who seek refuge, eulogized by Vishnu's fever missile, spoke to the cold fever missile of Vishnu. Lord Shiva said, "O cold fever, I am delighted. Leave off your fear from my fever. There is no fear from fever to him who remembers this anecdote." Sanat Kumara said, "Thus advised, the fever missile of Vishnu went away after bowing to Shiva. On seeing that activity, Krishna was surprised and dismayed. When attacked by the arrows of Pradyumna, the infuriated Kartikeya, the slayer of Daityas, hit Pradyumna with his spear. When hit by Kartikeya's spear, Pradyumna, though very strong, shed blood from his limbs and fled from the battleground. Hit with the various missiles by Kumbhanda and Kopakarna, Balabhadra, though strong, did not stay there. He fled from the battlefield. Garuda took up 1,000 bodies and drank up the water from the great sea. He then began to work havoc by showering sea waters through Avarta clouds. Then the infuriated bull, the power vehicle of Lord Shiva, hit him with great force by means of his horns. When his limbs were shattered by the blows of his horns, Garuda was dismayed. He forsook Vishnu and fled from the battleground immediately. When the situation was like this, Lord Krishna, dismayed by Shiva's refulgence, spoke to the charioteer suddenly. Lord Krishna said, "O charioteer, listen to my words. Drive the chariot immediately to Lord Shiva, so that I shall speak to him." Sanat Kumara said, "Thus commanded by Vishnu, the charioteer Dharaka, the foremost of persons of good qualities, drove the chariot immediately to Lord Shiva. Lord Krishna resorted to Shiva, favorably disposed to his devotees, bowed to him with devotion, with palms joined in reverence, and submitted as follows. Lord Krishna said, "O Lord Shiva, Lord of the gods, favorably disposed to those who seek refuge in you, I bow to you, the great Lord, the soul of all and of infinite power. I bow to you, the cause of the origin, sustenance, and dissolution of the universe, the sole form of perfect knowledge, the symbol of Brahman, the highly quiescent, the supreme Lord. The time, the divinity, the activity, the individual soul, the nature, the solid objects, the vital airs, the soul, the groups of created beings, the series of seeds and sprouts, everything is your illusion, O Lord of the universe. I resort to you, the cause of those things, the great Lord. By the different forms as you, by you sportively, you, the Lord of the worlds, support the gods and others and destroy those who go astray. You are the Brahman, the great light that is hidden in the Sabda Brahman, which the purified souls see like the soul firmament. You are the primordial Purusha without a second. You are the fourth being, the vision of the soul. You appear as undergoing change, though you are the Lord, the cause without another cause unto you. O Lord, for the manifestation of all the attributes, you appear different through your illusion, O Supreme Lord. O Lord, just as the unconcealed sun illuminates many of his reflections by his brilliance, so you too do, being the great illuminating light. O Great One,
O self-illuminated Lord Shiva, you brighten the attributes by the means of attributes itself, though you are not encompassed by the attribute. People whose intellects are deluded by your illusion become attached to sons, wives, abodes, etc., and sink and float in the ocean of sin. After deriving this divinely bestowed human habitation, if a person does not control his sense organs and respect your feet, he is to be pitied. He deceives his own self. O Lord, it is at your bidding that I have come here to cut off the hands of Bana. This haughty Bana was cursed by you, who are the destroyer of haughtiness. O Lord, please return from the battleground. Let not your curse go in vain. O Lord, command me to cut off the hands of Bana. Sanat Kumara said, O great sage, on hearing these words of Krishna, Lord Shiva, the Supreme Lord, who was propitiated by Krishna's eulogy, replied. Lord Shiva said, O dear, what you say is true. The Lord of the Daityas has been cursed by me. It is at my bidding that you have come here to cut off the hands of Bana. O Lord of Lakshmi, what can I do? O Vishnu, I am subservient to my devotees always. How can there be chopping of Bana's arms while I am watching? Hence, at my bidding, make me benumbed by means of your Jrimbhana missile. Thereafter, you can do as you please and be happy. Sanat Kumara said, O great sage, thus urged by Shiva, Lord Krishna was surprised. He returned to the battlefield and rejoiced. O Vyasa, Vishnu, an expert in the use of missiles, fixed the Jrimbhana missile to the bow and discharged it at Shiva. After enchanting Shiva and making him benumbed by the means of the Jrimbhana missile, Vishnu slew the army of Bana by means of swords, daggers, and clubs. That concludes the reading in English. Rachna Aunty will now read in Hindi. Jai Guruji. Shukrana Guruji. Jai Guruji. Shukrana Guruji for this seva. बाणासुर की तपस्या और उसे शिव द्वारा वर प्राप्ति, शिव का गणों और पुत्रों सहित उसके नगर में निवास करना, बाणपुत्री उषा का रात के समय स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ मिलन, चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण, बाण का अनिरुद्ध को नागपाश में बांधना, दुर्गा के स्तवन से अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होना, नारद द्वारा समाचार पाकर श्री कृष्ण की शोणितपुर पर चढ़ाई, शिव के साथ उनका घोर युद्ध, शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें जिब्रास से मोहित हो करके बाण की सेना का संहार करना। व्यास जी बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर की कृपा से ओतप्रोत है। अब मुझे शशि मालिक के उस उत्तम चरित्र के श्रवण करने की इच्छा है जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणाध्यक्ष पद प्रदान किया था। सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, परमात्मा शंभु की उस कथा को कहो जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणनायक बनाया था। आदर पूर्वक श्रवण करो। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का वे सुंदर चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बाणासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। व्यास जी, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थीं। वे सब की सब पतिव्रता तथा सुशीला थीं। उनमें दिति सबसे बड़ी थी, जिसके लड़के दैत्य कहलाते हैं। अन्य पत्नियों भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। जयेष्ठ पत्नी दिति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए। उनमें हिरण्यकशिप ज्येष्ठ था और उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए। उन दैत्य श्रेष्ठों का क्रमशः हलाद, अनुल्लाद, संघात और प्रहलाद नाम था। उनमें प्रहलाद जितेंद्रिय तथा महान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य सामर्थ्य न हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपने सिर ही दे डाला था। उसका पुत्र बलि हुआ। वह महादानी और शिव भक्त था। इसने वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बलि का औरस पुत्र बाण हुआ। वह शिव भक्ति, मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ और सहस्रों का दान करने वाला था।
उस असुरराज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकाधिपतियों को बलपूर्वक जीतकर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहकर राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिव भक्त बाणासुर के किंकिर के समान हो गए थे। उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का वर्ताव करने वाले देवता शत्रुतावश ही कष्ट झेल रहे थे। एक समय वह महासुर अपनी सहस्रों भुजाओं को से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके उस नृत्य से भक्त वत्सल शंकर संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने परम प्रसन्न हो उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी, शरणागत वत्सल और भक्त वांछा कल्प पत्रु ही ठहरे। उन्होंने बलिनंदन महासुर बाण को वर देने की इच्छा प्रकट की। मुने बलिनंदन महादैत्य बाण शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहा, बाणासुर बोला, प्रभु आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, वह बलिपुत्र बाण निश्चय ही शिवजी की माया से मोह में पड़ गया, इसलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाला दुराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्त वत्सल शंभु उसे वह वर देकर पुत्रों और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वहीं निवास करने लगे। एक बार बाणासुर को बड़ा ही गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट किया। तब बाणासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं। तब वह हाथ जोड़कर सर झुकाए हुए बोला। बाणासुर ने कहा, देवादिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं। आपकी कृपा से मैं बली हुआ हूँ। अब आप मेरी उत्तम वचन सुनिए। देव, आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो अब मुझे महान भार स्वरूप लग रही हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपने जोड़ का कोई योद्धा ही नहीं मिला। इसलिए वृक्षध्वज, युद्ध के बिना इन पर्वत सरीखी सहस्त्रों भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं? मैं अपनी इन परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों तथा पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वह भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान कार्य करने वाला, वरुण को गांवों का पालन करता गोपाल, कुबेर को गजाध्यक्ष, निऋति को सैरंधी और इंद्र को जीतकर सदा के लिए करत बना लिया है। महेश्वर, अब मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिसमें मेरी ये भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथों से छूटे हुए शस्त्रास्त्रों से जर्जर होकर गिर जाएं अथवा हजारों प्रकार से शत्रु की भुजाओं को ही गिराएं। यही मेरी अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करें। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, उसकी बात सुनकर भक्त बाधा पहारी तथा महामन्यु स्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। तब वे महान अद्भुत अट्टहास करके बोले। रुद्र ने कहा, अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों में कुल में नीच, तुझे सर्वथा धिक्कार है। तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है, तेरे लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं। अब तेरा दर्प चूर्ण होगा। तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अकस्मात महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी ये पर्वत सरीखी भुजाएं जलौनी लकड़ी की तरह शस्त्रास्त्रों से छिन्न भिन्न होकर भूमि पर गिरेंगी। दुष्टात्मन, तेरे आयुधगार पर स्थापित तेरा जो मनुष्य के सर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है, इसका जब वायु भय के बिना ही पतन हो जाएगा, तब तू अपने चित्त में समझ लेना कि वह महान भयानक युद्ध आ पहुंचा है। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपने सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। दुर्मते, वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पात दिखाई देंगे। यों कहकर गर्वहारी भक्त वत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभ्यर्चना की और फिर उस महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर को लौट गया। तदनंतर किसी समय दैववश उसका वह ध्वज अपने आप टूटकर गिर गया। यह देखकर बाणासुर हर्षित हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस दशा में आएगा। सो नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों का परागमी
विद्वान होगा और मेरी सहस्त्रों भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा, तथा मैं भी अपने अत्यंत तीखे शस्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। इसी समय शंकर की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन बाणासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित हो रात के समय अपने गुप्त अंतपुर में सो रही थी। उसी समय वह स्त्री भाव प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले हुए इस पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा, देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती ही नहीं। उसके यूँ कहने पर दैत्य कन्या उषा प्रेमांध होकर मरने पर उतारू हो गई। तब उस दिन उसकी उस सखी ने उसे बचाया। मुनिश्रेष्ठ, कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी। वह बाणतन्या उषा से पुनः बोली। चित्रलेखा ने कहा, सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही। वह यदि त्रिलोकी में भी कहीं होगा तो मैं उसे ले आऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, यूँ कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। फिर वे मनुष्यों का चित्र बनाने लगी। उनमें वृष्णि वंशियों के प्रकरण आरंभ होने पर उसने शूर, वसुदेव, राम, कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर जब उनमें प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका मुख अवनत हो गया और हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। उषा ने कहा, सखी, रात में जो मेरे पास आया था और जिसने शीघ्र ही मेरे चित्त रूपी रत्न को चुरा लिया, वह चोर पुरुष यही है। तदनंतर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंचकर क्षण मात्र में ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल में से उठा लाई। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रियतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अंतःपुर के द्वार की रक्षा करने वाले वेदधारी पहरेदारों ने चेष्टाओं से तथा अनुमान से इस बात को लक्ष्य कर लिया। उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी, दर्शनीय, साहसी तथा समरप्रिय नवयुवक को कन्या के साथ दुशीलता का आचरण करते हुए देख भी लिया। उसे देखकर कन्या के अंतःपुर की रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुषों ने बलिपुत्र बाणासुर के पास जाकर सारी बातें निवेदन करते हुए कहा। द्वारपाल बोले, देव, पता नहीं आपके अंतःपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। वह इंद्र तो नहीं है जो वेश बदलकर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। महाबाहु दानवराज, उसे यहाँ देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, द्वारपालों का वचन सुनकर तथा कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया। तदनंतर वह कुपित होकर अंतःपुर में जा पहुंचा। वहां उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बात की बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध उन्हें काल का ग्रास बनाने लगा। तदनंतर उन्होंने बाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो कालाग्नि के समान भयंकर थी। फिर उसी से रथ की बैठक में बैठे हुए बाणासुर पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर वीरवर बाण उसी क्षण घोड़ों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गया। फिर महावीर बलिपुत्र बाणासुर ने, जो महान बल संपन्न तथा शिव शक्ति था, छल पूर्वक नाग पाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर और पिंजरे में कैद कर वे शुद्ध से उपराम हो गया। तत्पश्चात बाण कुपित होकर महाबली सूतपुत्र से बोला। बाणासुर ने कहा, सूतपुत्र, घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में ढकेल कर इस पापी को मार डाल। अधिक क्या कहूँ, इसे सर्वथा मारी डालना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, उसकी यह बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ धर्मबुद्धि निशाचार कुंभांड ने बाणासुर से कहा। कुंभांड बोला, देव, थोड़ा विचार तो कीजिए। मेरी समझ से यह कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा। पराक्रम में तो यह विष्णु के समान दिख रहा है।
जान पड़ता है आप पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया है। साहस में यह शशि मौली के समानता कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर भी यह पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है। यह ऐसा बली है कि यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं, तथापि यह हम लोगों को तृणवत ही समझ रहा है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, दानव कुंभार राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह बाण से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा। कुंभार ने कहा, नराधम, अब तू वीरवर दैत्य राज की स्तुति कर और दीन वाणी से मैं हार गया यूँ बारंबार कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा करने पर ही तू मुक्त हो सकता है, अन्यथा तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोला। अनिरुद्ध ने कहा, दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे, शूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध में मुख मोड़कर भागना मरण से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो विरुद्धाचारण कांटे की तरह चुभने वाला होता है। वीरमानी क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेयस्कर है। भूमि पर पड़कर हाथ जोड़े हुए दीन की तरह मरना कदापि नहीं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिन्हें सुनकर बाणासुर को महान विस्मय हुआ और उसे क्रोध भी आया। उसी समय समस्त वीरों के अनिरुद्ध ने और मंत्री कुम्भांड के सुनते सुनते बाणासुर आश्वासनार्थ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी और परमेश्वर है। यह सारा चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर कहा, विष्णु और रुद्र रूप से लोगों की सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वे सर्वांतर्यामी, सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ, विकार रहित, अविनाशी, नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण हैं। बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। महामते, मन में यूँ विचार कर स्वस्थ हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं के रचने में निपुण भक्त वत्सल भगवान शंकर गर्व को मिटा देने वाले हैं। वे इस समय तुम्हारे गर्व को चूर कर देंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, महामुने, इतना सुनकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उसके वचन को मानकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। तदनंतर विषैले नागों के पाश से बंधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण दुर्गा का स्मरण करने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली हैं। आपका रोष बड़ा उग्र होता है। देवी, मैं नागपाश में बंधा हुआ हूँ और नागों की विष ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ, अतः शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, जब अनिरुद्ध के पिसे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में वहाँ प्रकट हुई। उन्होंने उन सर्वरूपी भयानक बाणों को भस्मात करके अपने बलिष्ठ मुक्कों के आघात से उस नाग पंजर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुनः अंतःपुर में पहुंचा दिया और स्वयं वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए। उनकी सारी व्यथा मिट गई और वे सुखी हो गए। तदनंतर प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो अपनी प्रिया बाण तन्या को पाकर परम हर्षित हुए और अपनी प्रियतमा उस उषा के साथ पूर्वक विहार करने लगे। इधर पात्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने तथा नारद जी के मुख से उसके बाणासुर के द्वारा नागपाश से बांधे जाने का समाचार सुनकर 12 अक्षौहिणी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों को साथ ले भगवान श्री कृष्ण के शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और श्रीविष का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से ज्वर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास आकर कहा, उनका स्तवन करके कहा, सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। गिरिशाई भूमन, आप सब प्रकाश हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है, वे स्त्री, पुत्र, ग्रह आदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतराते हैं।
जो अजितेंद्रिय पुरुष प्राग्वश इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह शोचनीय तथा आत्मवंचक है। भगवान, आप गर्वहारी हैं, आपने ही तो गर्वीले बाण को शाप दिया था, अतः आपकी ही आज्ञा से मैं बाणासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए महादेव, आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। प्रभु, मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका शाप व्यर्थ ना हो। महेश्वर ने कहा, तात, आपने ठीक ही कहा है कि मैंने इस दात्यराज को शाप दिया है और मेरी ही आज्ञा से आप बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। किंतु रमानाथ, हरे क्या करूँ, मैं तो सदा भक्तों के ही अधीन रहता हूँ। ऐसी दशा में वीर, मेरे देखते बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं। इसलिए मेरी आज्ञा से आप पहले जिम्ब शास्त्र द्वारा मुझे जिम्बित कर दीजिए, तत्पश्चात अपना अभीष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी होइए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, शंकर जी के यों कहने पर शांगर पाणी श्रीहरि को महान विस्मय हुआ। वह अपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए। व्यास जी तदनंतर नाना प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण श्रीहरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर जिम्नास्त्र का संधान करके उसे पिनाकपाणी शंकर पर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जिम्नास्त्र द्वारा जंबित हुए और शंकर को मुंह में डालकर खड्ग, गदा और सृष्टि आदि से बाण की सेना का संहार करने लगे। अध्याय समाप्त। शुक्राना गुरुजी फॉर दिस सेवा। जय गुरुजी।